So what is the total strength of your class? Section C. Ma'am, 40 plus. Is there student of section D? But this lecture is specifically for section C. So if any student mistakenly joined today's lecture from section D, you may leave. If you have any questions from the previous lecture, you can stay and attend the lecture. Okay, today we are going to start the chapter 2, and covering that chapter, we will start chapter number 3. Previously, we were studying about the stress. What was the stress? Stress was the load per unit area or intensity of the load. Today, we are going to start the strain. What comes in your mind? First thing, what is meant by strain? Strain is deformation per unit, some original dimensions. This is a dimensional quantity. Means if we are measuring the length, we will consider the normal. If we are considering the shape, we will consider the shear strain. Then we will go towards the third chapter, that is mechanical properties of the material. And a few properties we are going to study are important properties: yield strength, ultimate strength, behavior of the material, and Poisson's ratio. Then two parameters: creep and fatigue. आपका सिया दाऊद, बच्चे आप अवेलेबल हो अभी? दाऊद, Yeah, ma'am. आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर. अभी कोई स्टूडेंट अगर लॉबी में वेट कर रहे होंगे तो आप उनको अलाउ कर दीजिए. Okay, ma'am. Okay, थैंक ma'am. यू. So what is strain? In simple terms, strain is unit deformation of a particular body. And what is deformation? Whenever a force is applied to a body, it will tend to change the body's shape and size. Whatever changes are calculated, these are referred to as deformation. Means deformation body में जो भी changes हो रही हैं in respect to length or in respect to shape, वो आपके पास deformations कहलाएंगी. And when you are per unit डायमेंशन चेंजेस, जिसको हम थर्मल चेंजेस कहते हैं, थर्मल डिफॉर्मेशन कहते हैं. तो आपके पास किसी भी तरह का चेंज बॉडी में आ रहा है, उसको हमने डिफॉर्मेशन की टर्म्स में कंसिडर किया. तो यूनिट डिफॉर्मेशन विल बी दी स्ट्रेन. हमने दो तरह की मेन स्ट्रेसेस लास्ट टाइम पढ़ी थी. एक हमने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस, और एक था shear स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस क्या थी? इट वाज द लोड per unit area when the force is acting perpendicular to the body. क्या हमने कहा था, जब भी वो फोर्स किसी एरिया के किसी सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, जब इफेक्ट आपके पास टेंशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन मिलेगा, तो उसको हम उस स्ट्रेस को या उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स, और उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस थी उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कह रहे थे. नाउ कमिंग टू नॉर्मल स्ट्रेन, मींस जो स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे. So, जो नॉर्मल स्ट्रेस थी या नॉर्मल लोड था, उसके रिजल्ट्स क्या थे कि बॉडी वाज elongating or contracting. So whenever this elongation or contraction is coming in the body, this type of deformation will be referred to as normal strain. So the elongation or contraction of a line segment per unit of the length is referred to as normal strain.
इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा कि आपके पास एक कोई भी मेंबर है उसकी डायमेंशन पता होगी. फॉर एग्जांपल, in this body, the line segment AB has the dimension, original dimension as delta S. After deformation, the length has been changed and it is represented by delta S prime. So deformation is, strain is deformation per unit length. Deformation will be referred to as change in the length of the body. So change in length of this segment AB is delta S prime minus delta S. This is the change. When you calculate change per unit length, it will be the strain. So normal strain is symbolically represented by the symbol epsilon, and it will be given as change in length, that is delta S prime minus delta S divided by delta S. So this is normal strain. हम किस तरह इसको represent करें? Using the symbol epsilon. और क्या आपने calculate किया? Simply you have calculated the change in length and divided that change by the original dimension. So simply you can write epsilon is equal to delta divided by L. Delta is the change in length and L is the original length of the element or of the body. नॉर्मल स्ट्रेन के लिए आपने याद क्या रखना है? दो चीजें. एक तो ये कि डिफॉर्मेशन आपके पास, दिस इज द चेंज इन साइज. जो चेंजेस आपको मिल रहे हैं वो साइज के चेंजेस मिल रहे हैं. सेकेंड, इट इज ऑलवेज कॉज्ड बाय द नॉर्मल लोड. जब आपके पास नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी तो नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. आपके पास इसके यूनिट्स नहीं आएंगे. The strain so computed, however, measures only the average value of strain. जैसा हमने stress के लिए कहा था कि जो आपके पास sigma is equal to P over A formula था, that was giving the average value of the stress, not the stress at each point. और अगर आपके पास हर point पे stress आपने calculate करनी थी, तो we have defined 4 conditions for the normal stress, जिसको हमने कहा था कि average stress will be the simple stress. उन 4 पॉइंट्स में से वो जो 4 कंडीशंस हमने नॉर्मल स्ट्रेस के लिए डिफाइन की थी, नाउ आउट ऑफ दोस 4 कंडीशंस 3 आर एप्लीकेबल टू द स्ट्रेन एज वेल. First, the specimen must be of constant cross section, material must be homogeneous, and the load must be applied axially to produce the uniform stress. तो ये फर्स्ट 3 कंडीशंस हैं जो हमने स्ट्रेस में भी कहा था कि whenever stress is applied and the formula P over A is used, it gives the average value. However, if these conditions are applicable, that stress will be considered as the simple stress, or it will be the same at all points. ठीक है, तो सेम इज फॉर दी स्ट्रेन. स्ट्रेन के लिए भी आपकी यही कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं. अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम किसी एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए स्ट्रेन या स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो आपकी फुल बॉडी है उस पर लिमिट्स अप्लाई करके इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगी. Okay, this was the normal strain. Now coming to shear strain. Normal strain में हमने क्या कहा है कि first thing is normal load is applied. Second thing is elongation or contraction is produced. Means this is the change in size of the body. Now coming to shear strain. Shear strain, first thing it will be caused because of the, or it is caused by the shear force. जो भी इसमें strain produce हो रही है वो shear की वजह से produce हो रही है. You can see this PS, this is the sliding of the element, or the force was acting parallel to the body. So whenever the force is acting parallel to the body, means it is going to change the shape of the body. You can see the hidden line. This is the change of the shape. So two things are important for shear strain. First, shear force is applied. Second, change in shape of the body occurs. So whenever there is a change in shape of the body, you can say that this is because of the shear strain. And if you apply the tan theta formula over here, this is the perpendicular delta S, that is the changed dimension, and this is L. It will be treated as base of the triangle. Then tan of gamma will give you the delta is divided by L. Okay, so this is the formula for shear strain.
So you have calculated the change of angle or the angle between the original line. This was the original line, this perpendicular vertical line, and the displaced line of the element. So the angle will be referred to as shear strain. Any questions till now? मैम डेल्टा एस क्या है? Delta is the change dimension. अगर आप ये देखो ना, ये आपके पास डिफॉर्म्ड डायमेंशन है। जब आपका एलिमेंट डिफॉर्म हो रहा था, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है अपनी ओरिजिनल लाइन से। ओरिजिनल लाइन आपके पास क्या थी? परपेंडिकुलर लाइन, दिस वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से एलिमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ है। दिस इज डेल्टा एस। इस फिगर में आप देख सकते हैं। बेसिकली हमने एंगल कैलकुलेट करना है। तो आपकी जो ट्राइंगल बन रही है, उस ट्राइंगल में ये एंगल है, दिस वाज द ओरिजिनल लाइन एंड द डिस्प्लेस्ड लाइन। तो ये जो एंगल है गैमा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। tan ऑफ गैमा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अभी हमने स्ट्रेस भी पढ़ लिया, स्ट्रेन भी देख लिया कि स्ट्रेन क्या होती है। नाउ वी आर कमिंग टू one of the very famous relationship between the stress and strain that was given by Hooke's, the scientist Hooke's, who gave the law, Hooke's law, which states that stress is directly proportional to strain. ये आपने शायद पहले भी कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी हो कि हुक्स ने कहा था कि क्वांटिटीज में एक proportionality exist करती है। So he said that stress is directly proportional to strain. और जो उसने जब उसको फर्दर स्टडी किया तो वहां पे एक मॉडुलस भी डिफाइन कर दिया गया, दैट वाज द यंग्स मॉडुलस, और वी कॉल इट नॉर्मली एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो सिग्मा वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, एंड आफ्टर दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिग्मा वाज इक्वल टू epsilon E. So sigma is the stress, any kind of stress, and strain is the strain because of the stress. अगर normal stress है तो normal strain होगी, shear stress है तो shear strain होगी, and this E is modulus of elasticity or Young's modulus. So we have two types of behaviors, normal stresses and shear stresses. For normal stress, you can write Hooke's law as sigma is directly proportional to epsilon, and for shear strain, you can write tau is directly proportional to gamma. Okay, you can write Hooke's stresses, and in case of normal stress, Hooke's law will be given as epsilon E, where E is Young's modulus or modulus of elasticity, and for shear stress, it will be given as G into gamma, where G is modulus of rigidity. This is elasticity, means elasticity will be controlling the normal stress and strain, and this is rigidity that will be controlling the shear stress and strain. You can write Hooke's law for both types of stresses.
Now if we replace the quantities, sigma was P divided by A, normal load divided by perpendicular area, and epsilon was deformation, that is delta divided by L multiplied by E. From this equation, you can calculate the value of delta, that is deformation. So this is PL divided by A. This is a very famous equation that we normally use to calculate the deformation directly. अगर हमें लोड पता हो, लेंथ, एरिया, इलास्टिसिटी, हम डायरेक्टली डिफॉर्मेशन for shear stress, you can write it as V divided by A, that is shear force divided by parallel area, and gamma is delta S divided by L into G. So from here, you can say that shear deformation is VL over AG. E की units क्या होंगे? E is measured in E or G, both have the same units. It is measured in megapascals. Mostly we write it in megapascal or gigapascal. It is of the same unit of stress. जो stress के हमने units पढ़े थे, वही units आपके पास elasticity और rigidity के होंगे. यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब मैं थर्ड चैप्टर के प्रॉब्लम्स करवाऊंगी उसके साथ ही इसको सॉल्व करेंगे. एनी क्वेश्चन टिल नाउ सेकंड चैप्टर? Okay, coming to the third chapter of your book, that is mechanical properties of the material. Mainly जब mechanical properties की बात करते हैं, we are basically talking about the strength of materials, means how much capacity a material has to bear the loads. जब भी mechanical properties उसमें load criteria को हम consider करते हैं. So the strength of material depends on its ability to sustain a load without undue deformation of or failure. This is the basic definition of strength. So what is strength? Strength of a material depends on its ability to sustain a load without undue deformation or failure. किसी भी failure को bear या किसी भी load को bear करने की capacity है without failure. So material किस तरह का है वो खुद बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है. मींस एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन डिफाइंड स्ट्रेंथ. हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमने प्रोड्यूस करनी है. दिस इज मटेरियल्स ओन प्रॉपर्टी. किसी तरह उसको मेजर करना है, किसी तरह उसको डिटरमिन करना है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी कितनी. सो फॉर डिटरमिनिंग द मटेरियल स्ट्रेंथ वी हैव डिवाइड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स को हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद
एक मेन प्रैक्टिकल है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इज द टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, जो दो टेस्ट हैं, टेंसाइल टेस्ट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये आपको मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्ट, these are most short form, और इसमें हमारे पास जो मेन बिहेवियर या मेन चीज जो हम देखते हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या चल रहा है, वो रिलेशनशिप हम इसमें ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। And that will be drawn or will be represented on a diagram that is known as stress strain diagram। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम करते क्या है, हम मटेरियल को लेते हैं। अब आपके पास डिफरेंट कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ये बताते हैं कि किस मटेरियल पे किस तरह का टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। अगर मैं टेंशन टेस्ट की बात करूं तो जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो टेंशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम ये करते हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स पे टेंशन टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटल मटेरियल्स की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल्स की क्वालिटी है कि वो कंप्रेसिव को बेयर करते हैं, तो उसमें हम कंप्रेशन टेस्ट को कट करवा देते हैं। अब जब ये टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? किसी को आइडिया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होती है? Stress strain diagram is a graph plotted between the stress and the strain. Simple. अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, आपके पास एक मशीन है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। ये मैं अभी टेंशन टेस्ट की बात करूंगी। हम इस वक्त टेंशन टेस्ट को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। यूटीएम आपने लैब में लेआउट किया होगा तो आपको दो मशीन्स दिखाई गई थी, एक 100 टन कैपेसिटी की थी और एक 200 टन कैपेसिटी की थी। दोनों यूटीएम की, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अच्छा, अब इस टेस्टिंग मशीन में हम बेसिकली करते क्या है, स्पेसिमेंस को ग्रिप करा टेंशन टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, मींस वी ट्राई टू पुल द मटेरियल के दोनों एंड्स को हम पुल करने की कोशिश करते हैं। और जिस जिसा वो पुल होता चला जाता है, मीन जिस जिसा आप लोड अप्लाई करते चले जा रहे हैं, द मटेरियल विल स्टार्ट एलोंगेटिंग, उसकी जो एलोंगेशन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग द लोड, तो आपके पास एक लिनियरिटी एग्जिस्ट करती है, मींस द मटेरियल विल go to or material will start elongating up to certain point। ठीक है, वो elongate हो रहा होता है, means at this point, up till this point, the stress is directly proportional to strain। This is the first thing that we see in this relationship। सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, जिस जितना स्ट्रेस बढ़ती है वैसे वैसे आपके पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो स्ट्रेस इज proportional to strain, and we refer this point as proportional limit। Any stress corresponding to this proportional limit is referred to as sigma PL और अब जब आपने इसके बाद इसे लोड फर्दर इंक्रीज किया, then you will come across a point at which you say that now the material has lost its elasticity। कि जब अब इससे प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद हम लोड बढ़ाते हैं, there comes a point beyond which you can say that material will not come back to its original position। अब इसके बाद मटेरियल में एक परमानेंट सेट आ जाएगा।
मीन्स वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगा. Okay, so that point is referred to as elastic limit, and the stress corresponding to this elastic limit is referred to as elastic stress. Okay, so what is elastic point or elastic limit? The region within which the material is capable of coming back to original position after the removal of load. लेकिन अब इसके बाद जब आप लोड अप्लाई करोगे तो इसमें एक परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो यू दिस रीजन इज ऑन द एक्स एक्सिस is referred to as elastic region. So this is elastic region. Elastic region covers 2 points: proportional limit and elastic limit. 2 points ये कवर था. अब इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ स्टील स्पेसिमेन पे बात करूंगी कि अगर आपका जो फॉर्म बिहेवियर क्या हो, क्योंकि हमारा जो मेन काम है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारे स्ट्रक्चर्स में जो मेन 2 मटेरियल्स यूज होते हैं वो स्टील और कंक्रीट. दीज आर द मोस्ट कन्वीनियंट और कन्वेंशनल मटेरियल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री. तो हम या तो स्टील की बात करेंगे या फिर कंक्रीट की बात करेंगे. नाउ आई एम कमिंग टू स्टील बिकॉज वी आर डीलिंग विद टेंशन टेस्ट. तो टेंशन टेस्ट में जो डक्टाइल मटेरियल हम मेनली यूज कर रहे हैं दैट इज द स्टील मटेरियल. सो नाउ कमिंग टू स्टील, बियॉन्ड द इलास्टिक limit, if you continually applying the load, तो इस मटेरियल की एक खास प्रॉपर्टी है कि जब मटेरियल जब इस पे लोड इलास्टिक लिमिट से बाहर जाता है, देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दिस मटेरियल विल नॉट टेक एनी लोड बट इट विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म. ठीक है, इसकी एक डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस होती है. इस पे to as yielding. Yielding the continuous increase in load. लोड इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट लोड रहेगा, लेकिन आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट की होगी. एक एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन आपको नजर आ रही होगी. एंड दिस इज अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील. एक खास प्रॉपर्टी है स्टील की. So this is called yielding, and the stress corresponding to this yield point is referred to as yield stress. इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं. एक लोड यील्ड है जिसको हम नॉर्मली इलास्टिक लिमिट कहते हैं, और एक स्लाइटली जो इस पॉइंट पे आपके पास स्ट्रेस आ रही है, बहुत क्लोज दोनों पॉइंट्स होंगे. दिस विल गिव यू द yield stress. Why? Soon after this yielding, जब आपके पास yield point अचीव हो जाएगा, yielding complete हो जाएगी, मटेरियल जितना elongate होना था वो maximum elongate हो जाएगा. After that, material will again start taking load, and then it will go to the maximum peak of its capacity, maximum load carrying capacity achieves, and this is referred to as ultimate point. The point of, and this is given by sigma u. This is ultimate stress. Mainly we मैम क्या deal आवाज with कट these रही 2 है? types. जी बच्चे, मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा. anyone else having the same problem? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Let me check my internet connection. It's friend show yes. Okay, now the stress strain diagram. I'm going to repeat it now. So from the data of a tensional compression test, it is possible to compute the various values of the curve results as stress strain diagram. We take stress along y-axis and strain along x-axis. और इन दोनों पे हम जब ग्राफ को that and the cross-sectional area of the material used in testing, we can find the value of stress. हमने लोड क्योंकि अप्लाई करना है, लोड की वैल्यू आपको मशीन देगी, क्रॉस सेक्शन जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका कितना डाया है, वहां से आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करेंगे and then you will calculate the value of stress. Similarly, for values of strain, these are calculated by using the change in length divided by the original length. आपके पास जो total length होती है specimen की वो यूज करेंगे, सॉरी गेज लेंथ यूज करेंगे, the clear dimension of the specimen जो आपको मटेरियल आपकी मशीन में नजर आ रहा है, that clear dimension and divided by sorry its change divided by the clear dimension. और जो corresponding values हैं then you will plot them using the x and y axis. Characteristics of stress strain diagram भी मैं आपको डायग्राम पे बताएं, उन्हीं characteristics को हमने go through करना है. These are those points. The first point was the proportional limit, then the elastic limit beyond which the material will not come back to its original position, and this region was referred to as elastic region or elastic behavior. Mostly जो हम strength of materials 1 में materials use करेंगे, these are linear elastic materials. Linear elastic materials are those materials which obey the Hooke's law. ठीक है, जिनमें हम कहते हैं कि हुक्स लॉ आपके पास एप्लीकेबल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हम इन मटेरियल्स को नॉर्मली अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 1 में डील कर रहे हैं. सो उसके बाद अगर मैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल कहूँ तो आप समझ जाइएगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल इज अ मटेरियल व्हिच इज ओबेइंग द हुक्स लॉ एंड इज विद इन द इलास्टिक रीजन. ठीक है, इलास्टिक रीजन के अंदर. Then beyond the elastic limit, there was the yield point. Yield point is the point at which there is an appreciable amount of deformation without any increase in load. आप देख सकते हो y axis पे increase नहीं है, but x axis पे आपके पास significant increase है deformation का या strain का. So this behavior is known as yielding and it is a specific property of a few materials. स्टील जिसमें एक खास मटेरियल है जो हमने अपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में यूज करना है. स्टील के अलावा जो मटेरियल्स हैं जिंक, मोलिब्डेनम, ब्रास, ये और मटेरियल्स हैं जिनमें यील्डिंग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन से ओनली स्टील इज वन ऑफ द मटेरियल्स जो यील्डिंग शो करेगा. Now after yielding, when the load is increased, there comes a point at beyond which the material will fail, and this is the maximum capacity of the material to bear the load. This is known as ultimate stress. So proportional limit, this is a straight line from the origin to the point called the proportional limit, and this
From this, we deduce the well-known relationship, that is, the stress is directly proportional to strain by Robert Hooks. Means इस लाइन का जो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको इलास्टिसिटी डिफाइन करके देगा. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. ये प्रोपोर्शनल लिमिट का जो तक जो ग्राफ का स्लोप है वो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा. In the elastic limit is the permanent set कहते हैं. Yield point is the point at which there is an appreciable elongation or yielding of the material without any corresponding increase of load. And this phenomenon is peculiar to structural steel. Other steel and steel alloys or other materials do not possess yielding. For example, you can see this figure. This is also a stress strain diagram of different materials. It is showing concrete, aluminum, cast iron and high carbon steel. इनमें देखो कहीं पे भी आपको yielding नजर नहीं आ रही. वो जो एक straight line थी along the x-axis वो आपको नजर नहीं आ रही. Yielding नहीं मिल रही. Yield strength is closely associated with the yield point. For materials that do not have well-defined yield point, yield strength is determined by the offset. What is this offset? आपने basically फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक कर्व है जिसमें यील्डिंग नहीं आ रही. लेट्स सपोज this is the stress strain diagram of any material which is not defining the yield point. तो इस पे yield strength अगर आपको देनी पड़ जाए तो हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द इनिशियल पॉइंट. जहां से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. And then we offset this tangent line to a distance of 0.2%. 0.2% strain पे, let's suppose this is 0.2% strain. At this point, if you offset this line, ये line जहां पे cross करेगी, this will define the yield strength. This method is referred to as offset method. मैम 0.2% मीनिंग 0.2% means 0.2 divided by 100 strain. ये जो आपका ऑफसेट होगा वो 0.2%, 0.002 डिस्टेंस के ऊपर आपने प्लॉट करना. जो स्ट्रेन्स है ना वो इसी तरह होती है 0.002, 0.005, 0.01. इस रेंज में आपके पास स्ट्रेन्स आ रही होती है. लेट्स सपोज आपका जो ग्राफ है वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन 0.001, then 0.002, 0.003 and so on. तो जहां पे 0.002 आपके पास पॉइंट आ रहा है आप वहां पे ऑफसेट ड्रॉ करो. ठीक है. हमारे पास नॉर्मली स्ट्रेन की वैल्यूज इसी रेंज में. ओके मैम. तो ये उन्होंने कोई एक रिजल्ट निकाल लिया कि इस तकरीबन इस रेंज में यील्ड स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है. तो आप ये देखें 0.2% ऑफसेट मींस 0 से अगर स्टार्ट हुआ है आपका कर्व तो 0.002 पे आप एक लाइन टेंजेंट जो आपका इनिशियल टेंजेंट है उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ एंड द पॉइंट स्ट्रेस कर्व आप उस पॉइंट को यील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे. मींस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट जो आपके पास y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है दिस विल गिव यू द यील्ड स्ट्रेंथ. Then comes the ultimate strength. Ultimate strength is the highest ordinate on the
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हाईएस्ट पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे मिल रहा है वो आपके पास स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो। Now coming to the rupture strength, it is the stress at failure, जब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मटेरियल जब ब्रेक हो रहा है, एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, आपको ये फिगर नजर आ रही है, जब ये जो आपको ग्रिप पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हमने होल्ड किया हुआ था, जो टॉप पे आपको नजर आ रहा है ना, ये जो रिंग से बने हैं हेलिकल शेप में, यहाँ पे हमने ग्रिप किया हुआ था अपने मटेरियल को, हम इसको स्ट्रेच कर रहे थे, इसको पुल कर रहे थे, मटेरियल वाज एलोंगेटिंग। तो आप सेंटर में अगर देखें तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इज रिड्यूसिंग, क्योंकि जब भी इलोंगेट करेगा मटेरियल, अगर फ्लेक्सिबल मटेरियल है, अगर एक डायमेंशन में वो इलोंगेट हो रहा है तो दूसरी डायमेंशन में वो रिड्यूस हो रहा होगा। इसकी अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूसिंग। Okay, so this reduction in area is referred to as necking, इसको हम necking कहते हैं। Okay, this property is known as necking, कि आपका जो मटेरियल है वो नेक डाउन हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये क्रॉस सेक्शन इतना रिड्यूस हो जाएगा कि मटेरियल ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये आप फेलियर देख सकते हो कि ये फेलियर किस तरह से हुआ है, कि जहां पे एरिया बिल्कुल रिड्यूस हो गया था वहां पे मटेरियल आपका ब्रेक हो गया। Okay, तो this property is known as, और this phenomenon is known as necking, इसको हम necking कहते हैं। अच्छा, अब इस necking की वजह से क्योंकि एरिया आपका रिड्यूस हो रहा है, अगर आप एक्चुअल एरियाज को यूज करें, क्योंकि एरिया रिड्यूस हो रहा है मीन स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर के साथ मेजर करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, अगर आप बहरहाल उसको मेजर कर लें और उस रिड्यूस्ड एरिया को यूज करें तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कि जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि हम जो एरिया आपने इनिशियली मेजर किया था उसी एरिया को यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास सम वर्ड आप कह सकते हो कि स्ट्रेस में ड्रॉप आता है। आप इस फिगर में अगर देखें तो ये जो स्ट्रेस का ड्रॉप आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ नेकिंग। यहाँ पे हम ओरिजिनल एरियाज को यूज करें, अगर हम एक्चुअल एरियाज को यूज करें तो दिस ट्रू फ्रैक्चर स्ट्रेस विल बी अचीव्ड। तो अल्टीमेट के बाद मजीद इंक्रीज होगा और मटेरियल आपका फेल होगा। अभी इससे पहले हमने एक मॉड्यूलस पढ़ा, दैट वाज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। आपको जो मिल रहा था रिलेशनशिप, वो आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रहा था। नाउ कमिंग टू मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, this is the work done on a volume, on a unit volume of the material as the force is gradually increased from O to proportional limit, means starting point to proportional limit, जितनी मटेरियल में एनर्जी स्टोर हो रही है, that is referred to as modulus of resilience, and this may be calculated as the area under the stress strain curve from the origin O to elastic limit। अगर आपके पास जो elastic limit एरिया था अंडर द कर्व, ये जो आपको लाइट पीच कलर में नजर आ रहा है, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, दैट एरिया विल गिव यू द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। And there is another modulus, that is the modulus of toughness. This is the work done on a unit volume of the material as the force is gradually increased from O to rupture point. Rupture points means जहाँ पे आपका मटेरियल फेल हो गया है, वहां तक जितनी मटेरियल ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है, that energy is referred to as modulus of toughness, and this may be calculated as the area under the entire stress strain curve। जो आपका पूरा स्ट्रेस कर्व है, अगर ये कर ले तो उस एरिया को हम मॉडुलस ऑफ टफनेस कहेंगे।
It is the ability to absorb energy without causing it to break. जी, any questions up till now? Okay, now stress strain behavior of ductile and brittle materials. Ductile materials क्या है, brittle materials क्या है, पहले इसको देख लेते हैं. डक्टाइल मटेरियल से पर बात करूं तो डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपको बिफोर फेलियर वार्न करें, जो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें शॉक एब्जॉर्बेंट्स हो, जिसमें आप क्या कह सकते हो कि अगर आप लोड अप्लाई करो तो वो फेल ना, जितना आप लोड इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, दे आर केपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग द लोड्स, they are capable of absorbing the shock, they are capable of taking more load, and they give you yieldings, they give you warnings, they give deformations before failure. ऐसा नहीं होगा जैसा कंक्रीट की अगर मैं एग्जांपल लूं, आप कंक्रीट को एक थ्रो सिर्फ आप अगर देते हैं, एक दफा लोड उसमें अप्लाई करते हैं, इट विल सडनली ब्रेक. Okay, so this is some kind of material which is not giving you any kind of deformation, which is not warning you before failure. ऐसे मटेरियल जो आपको फेलियर से पहले वार्न ना करें, जो फेलियर से पहले आपको किसी तरह की डिफॉर्मेशंस ना दें और डायरेक्टली फेल हो जाए, उनको हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं. ऑन द अदर साइड, वो मटेरियल्स जो बिफोर फेलियर आपको वार्निंग्स दें, उनको हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं. So ductile material, any material that can be subjected to large strains before it ruptures. ये जो large strains की हम बात कर रहे हैं ना, in simple words, these are the warnings. ठीक है, जब हम large strains कह रहे हैं, this is basically warning that a material is giving you before failure. So such materials are capable of absorbing shock or energy. These materials are overloaded failure. आपके पास जो वार्निंग्स है वो स्ट्रेन्स या डिफॉर्मेशंस, these are the warnings before failure. Ductility of material can be specified as percent elongation because जी वार्निंग के साइंस क्या होंगे मैम? कैसे पता लगेगा ये वार्न कर रहा है? बच्चे आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज. यस मैम श्योर. मैं पूछ रहा हूँ कि ये मटेरियल कैसे वार्न करेंगे हम कि ये टूटने लगे हैं? डिफॉर्मेशंस आती है ना, क्रैक्स आते हैं. क्रैक देखो, कोई भी तो मैम मटेरियल जब क्रैक्स आए ब्रेक तो होगा फिर ना, टूट ही जाना. मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ. आपने स्ट्रक्चर्स में जिस तरह अगर बीम्स हैं, आपके घरों में बीम्स होंगी, कॉलम्स होंगे, आपको या प्लास्टर में आपको अक्सर क्रैक्स नजर आते हैं. तो जो क्रैक्स है ना, ये स्लाइट वार्निंग्स हैं. ये आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रैक अपीयर हो चुका है. अब इस पे अगर आप फर्दर लोड अप्लाई करोगे तो ये क्रैक आहिस्ता आहिस्ता फेलियर की तरफ जाएगा. क्रैक ओपन होना शुरू होते हैं. आपको पहले हेयर लाइन क्रैक मिल रहा है, वो हेयर लाइन क्रैक आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू होगा. उसकी क्रैक विड्थ, अब एक वक्त ऐसा आता है कि वो क्रैक विड्थ इतनी बढ़ जाती है कि इट इज विजिबल टू आई, आपको नजर आ रहा है सामने कि वो उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है, ओपन हो गया. ओपन होने का मतलब ये है कि उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है, अच्छा ये चीजें खैर बहुत ज्यादा डिटेल में चली जाएंगी,
मैं आपको एक फिगर की हेल्प से समझा देती हूँ। Let me search it. तो वो फिगर्स तो मुझे फिलहाल नहीं मिल रही, आपको फिगर्स अपलोड कर दूं। जैसे भी आपको इतना समझा देती हूँ, लेट्स सपोज आपके पास ये बीम है, ठीक है, आपने इसके ऊपर किसी तरह के लोड्स अप्लाई किए, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट लोड है, लेट्स सपोज दिस इज 20 के पर फीट। इसमें तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वार्निंग नजर आती है ना किसी भी स्ट्रक्चर में, वो उसके ऊपर आने वाले क्रैक्स होते हैं। आपको लेट्स सपोज आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, जब तक ये हेयर लाइन है ना, हमारे लिए खतरा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ यू आर इंक्रीजिंग दिस लोड, लेट्स सपोज हमने इस 20 को इंक्रीज, स्लोली स्लोली ये जो क्रैक्स हैं इनकी विड्थ ओपन होना शुरू हो जाएगी। ये जो पूरा रीजन है ना, आपको ये ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसके ओपन होने का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्रैक विड्थ। ठीक है, ये क्रैक की विड्थ कहलाती है। इस पे लिमिट्स है, स्ट्रक्चर की लिमिट्स हैं कि कितना मैक्सिमम ये ओपन हो सकता है सेफली विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू योर स्ट्रक्चर, कितना मैक्सिमम ये ओपन हो सकता है। दूसरी चीज होती है इसकी क्रैक डेप्थ। ठीक है, इसकी डेप्थ और विड्थ, इन दोनों पे लिमिट्स होती हैं। अच्छा, ये वार्निंग्स हैं आपके स्ट्रक्चर में। अगर तो आपका स्ट्रक्चर डक्टाइल है ना, तो आपको क्रैक विड्थ भी देगा, क्रैक डेप्थ भी देगा। ये आपको वार्न करेगा कि आपका स्ट्रक्चर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ हम एक और चीज जो एसोसिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। अब जितना ये क्रैक डेप्थ आ चुकी है ना, वो आपकी डेप्थ की कैलकुलेशन में दिस इज कॉल्ड, ये वो जोन है जिसमें लोड कैरी कर रहा है, इससे नीचे वाले जोन में वो लोड को कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्रैक लग गया। नाउ इट इज नॉट इफेक्टिव टू कैरी द लोड। तो ये वो सर्टेन वार्निंग्स हैं जो, अगर ब्रिटल मटेरियल होता तो होता ना, तो क्रैक विड्थ आपको मिलनी थी ना, आपको क्रैक डेप्थ मिलनी थी। जैसे ही आपने लोड को इंक्रीज करना था, आपका मटेरियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ब्रेक हो जाना था। तो ये ओके वो मैम, तो मैं वार्निंग्स जा हैं जिनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इवैल्यूएट करते हैं। मैं इसकी कुछ फिगर्स आपको इंशाल्लाह सर्च करके, मेरे पास थी, अगर वो मिल गई तो मैं आपको वही भेज दूंगी, अपलोड कर दूंगी। थैंक यू मैम। हाँ? अच्छा, हम बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स की। डक्टाइल मटेरियल्स क्या है जो आपको बिफोर फेलियर आपके पास वार्निंग्स भी देंगे, डिफॉर्मेशंस भी शो करेंगे, और डिफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, सडनली इंक्रीज नहीं होगी। एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल इज स्पेसिफाइड बाय द परसेंट इलोंगेशन। हम परसेंट इलोंगेशन की बात क्यों करें, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, और डक्टाइल मटेरियल्स में हम ये कहते हैं कि दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग टेंशन। ठीक है, टेंसाइल लोड्स को कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको इलोंगेशन के साथ रिलेट करें कि मटेरियल इलोंगेट होने की कैपेसिटी रखता है, टेंशन लेने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, अब परसेंट इलोंगेशन मींस मटेरियल इज केपेबल ऑफ इलोंगेटिंग, तो वहां से हम परसेंट इलोंगेशन कैलकुलेट कर लेंगे, या परसेंट रिडक्शन इन एरिया। अब ये दोनों चीजें
रिलेटेड है कि आपके पास अगर इलोंगेट हो रहा है मटेरियल तो उसका एरिया रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो परसेंट इलोंगेशन या तो आप मेजर कर लें या परसेंट रिडक्शन इन एरिया मेजर कर लें। ये दोनों चीजें अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे दैट विल डिफाइन द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो दोनों के फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए, LF that is the length at fracture minus L naught that is original length of the specimen divided by original length। तो ये आपको परसेंट elongation मिल जाएगी। On the other side अगर आप percent reduction of area calculate करते हैं तो A naught that is the original area of the specimen, AF that is the area at fracture divided by area at fracture। ये तो दोनों तरह से हम डक्टिलिटी को मेजर कर सकते हैं, या आप परसेंट elongation मेजर कर लें या आप परसेंट रिडक्शन मेजर कर लें। Steel and metals such as brass, molybdenum, and zinc exhibit stress strains, giving the elastic stress strain behavior, yielding at constant stress, and strain hardening making at rupture। यानी कि अगर आप स्टील की बात करें तो हमने अभी पहले कहा कि उसमें यील्डिंग होती है और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मिल गए। अदर देन स्टील जो तीन मेन मटेरियल्स हैं जो ये तमाम प्रॉपर्टीज देते हैं, दीज आर ब्रास, मोलिब्डेनम एंड जिंक, ठीक है। इनके अलावा जो मटेरियल्स हैं उनमें बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मिलेंगे लेकिन यील्डिंग नहीं मिलेगी। Then comes the brittle material. Brittle materials exhibit little or no yielding before failure। ये आपको डिफॉर्मेशंस नहीं देते, बहुत कम डिफॉर्मेशंस देते हैं। जैसे ही लोड आप अप्लाई करोगे सडनली ब्रेक हो जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन इज एन एग्जांपल, और अगर मैं अपने स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो कंक्रीट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। अच्छा, अब अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इस पे प्लॉट करें तो इट गोज ऑन द नेगेटिव साइड मोर। ये पॉजिटिव साइड पे ये कम होगा। पॉजिटिव साइड मीन दिस इज टेंशन टेस्ट, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास टेंसाइल टेस्ट डाटा मिल रहा होता है एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाटा मिलता है। मींस दे आर गुड इन टेकिंग कंप्रेशन एंड वीक इन टेकिंग टेंशन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी बहुत है जी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम है। इसमें एक ग्राफ कंक्रीट का भी बना हुआ है, दिस इज फॉर कंक्रीट। इसकी अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो दिस इज 0.4 KSI। on the other side compressive strength is 5 KSI, that is more than 10%, 10 times greater than the tensile strength। और ये शायद आपने अगर POC पढ़ी है तो उसमें आपने ये पढ़ा भी होगा कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट इज मोर देन 10 टाइम्स ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहीं तक रखते हैं, मैंने दूसरे सेक्शन को भी यहीं तक अभी पढ़ाया है। स्ट्रेन हार्डनिंग से इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई भी सवाल पिछले लेक्चर में से या इस लेक्चर में से? अगर किस डी सेक्शन का कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट थे यहाँ से बिलाल, आप थे उनसे? नो मैम। सात सात बिलाल, सॉरी। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो मैम।